Hi everyone, am I audible? I'm just going to start the recording here. Hi everyone, Ashish Kyal here, and it's fantastic to have you all here. I'm just checking if you are able to hear me out loud and clear. Himanshu, Mohit, everyone, Nitesh, Mayank, glad to see you also here. And it's Thursday at 4 instead of Friday at 4 क्योंकि Friday तो छुट्टी है और इसीलिए आज Thursday at 4 हम कर रहे हैं यहाँ पर. अब बिफोर आई मूव ऑन, और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक एंड यू बिकम फियरलेस like him and able to make it big in the markets also. Radha, Sandipan, Datta Prasad, Kaushik, glad to see you also here. Neelam, amazing to have you, every one of you who are here with me. And markets के बारे में देखेंगे हम यहाँ से क्या लग रहा है, निफ्टी कहाँ जाएगा. और लास्ट वीक भी हमारा लाइव नहीं हो पाया था, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट नियो वेव पैटर्न में बात करूंगा. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स टुडे. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नियो वेव पैटर्न. I'm going to talk about volume profile, which is very crucial, and how options data helped me to predict in the morning today also 22,420 level. Did you follow that tweet? Are you guys following the tweet which I am doing? Is it useful? 22,420 and the Purnima cycle. Is it working? Are you seeing the power of Purnima? Are you seeing the power of lunar cycle? 22,420 का ट्वीट किन किन लोगों ने चेक किया था? Are these tweets, short videos, 1 minute market sutra helping you all? If yes, then do let me know on the chat here that these are useful. So I'll keep making these kind of videos, tweets, 1 minute short market sutras for you all. Is it Bindu? आप लोगों को okay, fantastic. You Sandipan कह रहे I made money today from 2420 tweet. Fantastic. तो मतलब काम कर रहा है. एंड पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, आर यू एबल टू सी मी, हियर मी आउट? यूट्यूब पे लिंक पिन नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है जूम पे ज्वाइन करने के लिए. डायरेक्टर साहब कौन मैनेज कर रहा है, प्लीज एक बार चेक करिए. देयर इज नो वन हु इज देयर ऑन द यूट्यूब. लेट मी जस्ट शेयर द लिंक, जस्ट गिव मी अ सेकंड. And I'm just going to do that very very quickly. And do not forget to like, subscribe the channel if you are liking this across. Okay, just let me share the link very quickly. Just a second. Okay, यहाँ पर लिंक मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ में, and I'm also pinning it across. Okay, lovely. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से. Let us just look at it in a very very simple fashion. And okay, I'm going to pin it across. Okay, perfect. Your insights are like lighthouse for us. Thank you, Dr. Chetan. And actually, I went in with 22,200 and exited at 22,800 calls. Fantastic. Well, the levels are working despite of the market moving down. एक इंडिकेटर मैंने लगाया था, आप लोगों ने ट्वीट पे देखा था. वेरी पावरफुल इंडिकेटर which does not give positive divergence easily. But today I mentioned it twice. That indicator is giving me positive divergence. Let's see किन 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 लोगों ने फोकस किया था. ट्वीट के अलावा चार्ट पे किन किन लोगों ने फोकस किया था, कौन से लेवल पे था, वो क्या क्या कौन सा इंडिकेटर था. यू रिमेंबर KST एक इंडिकेटर. I applied that KST indicator and mentioned about a positive divergence we are seeing on the chart. And Brahmastra participant, these are, or this was also a failed breakdown pattern. Do you know that? चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, बाद में बात करेंगे ये सारी चीजों के बारे में. Glad to know that these are useful and you are liking these videos. Let me just share across my screen very quickly. Everyone, are you able to see this chart here? I was also live on CNBC when I talked about these levels. Are you able to see the chart here on the weekly time frame? Every one of you? Okay, fantastic. If you are seeing this chart, देखिए ये जो लेवल है, मैं ये नहीं कर रहा निफ्टी ने लो बना दिया है, लो ब्रेक नहीं होगा. You don't have to catch that. Very simply, can I say this is the area of consolidation? Even on CNBC when I was talking, I talked about this area. This is the zone seen in April 2024. Can you see that level? Can you see that level? This is the zone which we again saw happening when the Trump tariff was announced in May 2025. And this is the zone where we are again right now. So this is the three levels. So this is a very crucial zone. The lower trend line that you are seeing here is the trend line which I have not drawn it now.
This lower trend line, I've drawn it long back. And I've also talked about one more setup. ओवरऑल वेव थियरी के हिसाब से पैटर्न क्या लग रहा है मुझे? अर्लियर आई वाज एक्सपेक्टिंग, सो दिस इज एन एंटायर diametric pattern going on since long. Earlier I was, let me just share that across if you want to see the long term chart here with my cycles. So this will become April now. Okay, so if you're looking at this chart, uh, this was wave D is what I was expecting, and this is ongoing wave E. But looking at the fall, it looks like the overall pattern formation is in the form of a ABC, and we might have a D and an E leg possibly going to form. Is it going to come tomorrow? Is it going to come in coming week? That depends on event. And event ke karan we cannot say with certainty. So you have to maintain stop loss. 22,180 is very crucial. My expectation is that we might see again a move back on the upside, and possibly we might form a triangle pattern. So हो सकता है हम शायद ये triangle pattern form करें with wave D, wave E, and then we will start seeing a good positive traction. Now, will it consume a lot of time to go up? देखेंगे. It is too soon to conclude that. So हो सकता है इतना time ना ले. We might move a little sharper first and then we might move slower. Do you remember, anyone remembers what is this timeline? देखते हैं कौन कौन अटेंटिव रहते हैं मास्टर क्लास में. आज आपकी टेस्ट है, एंड यहाँ पर कौन कौन अटेंटिव रहते हैं. लेट मी जस्ट सी दैट. September, fantastic. Rajesh Pawar, September, Ojas, Abdul, Pankaj, fantastic. This is the period of September 2026. When the trend line was broken, I mentioned September 2026 तक गड़बड़ रह सकती है. So September 2026 is the period. So अभी हम अप्रैल में आ चुके हैं. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीना है जहां पर ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा ही. 5 महीना है, मार्केट कैन गो साइडवेज इन अ रेंज एंड पॉसिबली फॉर्म अ ट्रायंगल पैटर्न. हो सकता है कि पुल बैक इतना स्लो ना हो. सो मोर आइडियलिस्टिक पुल बैक कैन बी फास्ट, देन इट विल स्लो डाउन. सो हो सकता है वी माइट गो अप वेरी फास्ट, देन वी कम डाउन अगेन, एंड देन वी गो अप अगेन, रीटेस्ट इट, retrace 50% of the fall somewhere around this area, and then we again move down in the form of wave E, and then we reverse back. That's how is the overall pattern formation can happen from here on. That's how I am looking at it. So we might be forming a triangle pattern. That's the pattern that looks to be the most idealistic pattern on the chart. Now, will it happen? This is true as of now. Things can change. Forecasting है, market है, risk है. So उसके साथ ही हमें forecast करके समझना है. But the most important technique that gives me this forecasting ability is Elliott wave combined with time cycle. ये दोनों टेक्निक के बेसिस पे ही यहां से पता चलता है कि किस तरीके से प्राइसेस बिहेव कर सकता है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, दिस इज नॉट वेर यू पुल द ट्रिगर. मैंने एक ही मार्केट सूत्र अभी भी डाला था. यहां पर ट्रिगर पुल नहीं करना है हमें. दिस इज जस्ट गोइंग टू गिव मी द एरिया. सो निफ्टी वीकली चार्ट shows we are near the base formation, price action awaited, possible triangle pattern until September 2026. Combined neo wave with time cycle. यहां पर अगर आप देखोगे, so this is what I am showing right now. And people who are, trust me, people fail to make money in the market not because their research is wrong, because their execution is a problem. They will see this chart and start buying. नहीं, this chart will give me the trend, and trend के साथ मुझे पता चल रहा है ओवरऑल व्यू क्या है. यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करना है very clearly. Now from the weekly chart, I'll go to the daily time frame chart. I'm making you all a proper systematic trader. That's my intention. Now, when I look at the daily time frame chart,
I look at the dates and the time. The short term cycle of 55 days is on the sell side because उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं रिस्पेक्ट किया तो नहीं किया. ये साइकिल से पुल बैक भी एक आध दो दिन का मिला, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे. सो ये साइकिल का अभी वैलिडिटी नहीं है. एज ऑफ टुडे दिस स्पेसिफिक साइकिल इज नॉट कैरिंग एनी वैलिडिटी. द नेक्स्ट डेट इज गोइंग टू बी May 2026. ऐसा नहीं कि हमेशा फेल होगा, एक आध बार इवेंट ड्रिवन मार्केट में ये हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग. So the next date is 27th of May 2026. That is what we have to keep a close watch on, and this is going to be very important. So Gunjaish kya hai? We are seeing a fall in the form of a double corrective pattern, which is going to be much more clear on 1 hour time frame chart. And I'm going to put an indicator. Which one? KST. KST is a very powerful indicator, which we are anyways going to do in our options mantra. Next weekend पे कोई कौन ready है next weekend के लिए? ऑप्शंस मंत्रा की ट्रेनिंग है हमारी. आर यू गाइस देयर? 11th 12th में कौन कौन है? त्रिशूल प्रोग्राम में ऑप्शंस मंत्रा सैटरडे संडे का लाइव प्रोग्राम में है क्या आप लोग? वी विल बी डूइंग अ लॉट मोर. द रीजन आई एम आस्किंग इज ये केएसटी के ऊपर हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले, कंबाइनिंग विथ ऑप्शंस चार्ट directly. Okay, I can see many of you are a part of it. So we will be doing it in a much detailed fashion. This KST indicator does not give positive divergence very often. it बहुत रेयर होता है, लेकिन डाइवर्जेंस से बाय नहीं करना है, हमें प्राइस एक्शन चाहिए. नाउ इफ आई लुक एट दिस आवरली चार्ट, this low, and then we have this low also. So there is a series of positive divergence that we see. Series of divergence, which means fall is getting smaller. Okay, fall is getting smaller. Gajendra Singh, आपका डिटेल्स प्लीज यहां पर. एंड यहां पर we are seeing positive divergence here, and from here we are also seeing very crucial thing on the chart. Can you see that each of this fall is equal? ये वाला लेवल याद है 22,180? अभी नहीं, हमने एक हफ्ते पहले वेबिनार में बनाया था, वीडियो में मैंने बताया था आपको एक हफ्ते पहले. 22,180 का लेवल ध्यान है किसी को? दिस लेवल which we looked at it, and we looked at this level. And can you see that this is exactly the equality level which Nifty touched and reversed back on the upside? Can I also say this is for the first time? Okay, this is for the first time the gap got filled intraday. देखते हैं इस बात में कितना अर्थ है, देखते हैं गैप शुरू कहां से हुआ था. आई एम नाउ टीचिंग यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा गैप फिल नहीं हो रहा, गैप फिल करने की कोशिश की होगी लेकिन फिल नहीं हुआ. दिस गैप डिड नॉट फिल इंट्राडे. यस और नो? आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बात कर रहा हूं, आपको यस या नो बोला. आप एग्री हो सकते हो या आप डिसएग्री हो सकते हो, ठीक है. दिस गैप डिड नॉट गेट फिल इंट्राडे, ठीक है. मैं आपको बुलिश नहीं बना रहा हूं, प्लीज कीप दैट इन माइंड. आई एम जस्ट रीजनिंग आउट थिंग्स. अनदर गैप हियर, ये इंट्राडे था, यहां पर ये भी गैप फिल नहीं हुआ इंट्राडे. ओके, ये नेक्स्ट डे था, डन है. ये गैप था, ये गैप भी यहां तक था, ये फिल नहीं हुआ इंट्राडे, नेक्स्ट डे, ठीक है. ये बहुत ही माइनर गैप था तो इसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, बहुत छोटा सा गैप था, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है. दिस गैप डिडंट फिल इंट्राडे. ओके, बाद में ऊपर था. दिस गैप अटेम्प्ट भी नहीं हुआ फिल होने का, नीचे था, सेलिंग प्रेशर. दिस गैप अगेन गैप के बाद सेलिंग प्रेशर. दिस गैप नो इंट्राडे फिलिंग, नीचे था, प्रेशर था. मतलब जितने बार गैप डाउन हुआ मार्केट यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया. ये पहला गैप ऐसा है कि गैप डाउन होने के बाद में टारगेट जी वेव का इक्वली टच करने के बाद में मार्केट रिवर्स होकर गैप फिल किया, which means that this is something which is different happened this time. Buying emerged right now, INR appreciated sharply, crude oil बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी गैप फिल हुआ with a positive divergence, which means something now is changing. It's not a sign कि हम नीडर हो जाए, ओवरनाइट रिस्क कैरी करे, लॉन्ग पोजीशंस कैरी करे, नहीं. बिकॉज अभी भी 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, which means now I am still going to be bearish but positionally, but I will be now getting careful, क्योंकि अभी तक मार्केट ने ये जो गैप है वो गैप को फिल किया, लेकिन 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से वीकली ट्रेंड पे रिवर्स नहीं है, डेली पे रिवर्स नहीं है, मतलब गड़बड़ तो है.
पैटर्न के हिसाब से वेव जी यहां कंप्लीट होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो my new wave pattern, which is a forecasting tool, is giving me a very strong indication. My KST pattern is giving me something is happening out there. Let's now look at behind the scenes big players activity. How do you see big players activity? We will see big players activity by looking at, very simply, by looking at what's happening with the respect to volume profile. Okay, and it's very, very crucial. So I'm going to go on the chart. Let me just share across my screen here, just a second, and we look at volume profile. जब तक मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, I just want to know from each one of you, is this analysis helpful? जो हम कर रहे हैं लाइव वेबिनार में, आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स एंड इज इट हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड? ओके, ठीक है। सो लेट मी नाउ गो ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल नेक्स्ट वीकेंड 11-12 अप्रैल को हम बहुत डिटेल में करने वाले, विच इज नॉट नेसेसरली फॉर ऑप्शंस ट्रेडर्स ओनली। वी विल बी डूइंग दिस वॉल्यूम प्रोफाइल इवन फॉर कैश में स्टॉक्स लेना है। ओके, इट इज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। रश्मित सेठ कह रहे थैंक्स फॉर बीइंग माय मेंटर, ग्लैड टू नो। सो नाउ आई एम गोइंग, यहां भी एग्जीक्यूशन ही है। रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, what we looked at a weekly chart is not execution level. What we looked at the daily chart, we looked at hourly chart. We are not executing trade. We are only understanding what's happening around. कहां पर क्या हो रहा है, हम खाली वही चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं. We are not executing any of this. You know why traders lose money? Majority of the traders, they lose money because they don't know the execution. That's the key, which is on a 15 minutes time frame chart. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. And trading temperament and psychology is very crucial. You should ensure that when you are having the right set of risk reward or not. Unless there is a right set of risk reward, no trade. If there is a right set of risk reward, then only you have to trade. Now, when I'm looking at this chart, okay, I'm going to go on the daily time frame first. Volume profile daily time frame पे कहाँ है देखते हैं. If I'm looking at this chart, this is where, do you see, I'm taking this much of data. Okay, this much of data. The highest volume profile happened here. मतलब 25,000 निकालना बहुत मुश्किल है. 24,970, and it's very far away. No point in talking about it right now. But if I'm looking at the current data here, can I say this is the zone 22,480? ये futures है, so keep that in mind. 100, 150 points, 100 points का plus minus होगा. So can I say this is the zone where we have a very high volume that has happened in the past? You can agree with me, you can disagree with me, but you have to take a stand. Can I say this is the zone where high volume happened here? High volume, this area. अगर कोई नेगेटिव बेरिश न्यूज आ जाती है ओवरनाइट में कुछ, एंड अगर निफ्टी 22,180 ब्रेक कर देता है, तो मतलब बड़ी मंदी आ जाएगी फिर सितंबर 2026 तक, क्योंकि बीच में लेवल्स ही नहीं है, बीच में सपोर्ट ही नहीं है, वॉल्यूम्स ही नहीं है. देखो ना, वॉल्यूम है क्या यहाँ पे? वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है. मतलब ये फाइनल लाइन इन द सेंड है. दिस इज द फाइनल लाइन इन द सेंड. दिस हैज टू बी मेंटेन्ड. दिस हैज टू बी मेंटेन्ड. बिलो दिस बहुत बड़ी गड़बड़ है दोस्तों. वी हैव टू गेट केयरफुल. ओके, यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये लेवल फिलहाल के लिए तो इंटरेस्टिंग है. नाउ आई कैन सी फ्रॉम दिस लेवल दैट मेजॉरिटी ऑफ द पोजिशंस आर बिल्ट अक्रॉस इन दिस जोन. ये कौन सा पीरियड है मालूम है आपको? ये जो कैंडल दिख रहे हो, जून 2024 है. डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन जून 2024? नेवर फॉरगेट इवेंट्स. नेवर फॉरगेट क्रूशियल इवेंट्स. डू यू नो व्हाट हैपेंड इन जून 2024? इलेक्शन का आउटकम था जून 2024. दैट्स द वॉल्यूम हैपेंड हियर. ह्यूज वॉल्यूम वेयर मोदी जी वाराणसी में पीछे चल रहे थे एक समय पे जब मार्केट क्रैश हुआ. इमेजिन करो, वाराणसी जैसी जगह पे राम मंदिर बनाने के बाद वहां पर पीछे चल रहे थे, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर द मार्केट, एंड दैट्स वेयर इट क्रैश्ड बट रिकवर्ड. ट्रैप किया इस एरिया में. ह्यूज नेगेटिविटी था, वो बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज था, बट ट्रैप किया सेलर्स को. ट्रम्प का टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ था यहां पर.
यू रिमेंबर दैट? यार ये सब डेट्स याद रहती कि नहीं आपको? मुझे ही याद रहती है। अप्रैल 2025, 7 अप्रैल 2025 को ट्रम्प टेरिफ अनाउंसमेंट था। सो दिस वाज इलेक्शन, गड़बड़ थी, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को प्रोटेक्ट किया। आई विल राइट डाउन फॉर यू, दिस वाज टेरिफ, ट्रम्प। उसके बाद से ट्रम्प एरा ही चल रहा है पूरा। ट्रम्प टेरिफ अनाउंसमेंट था। अब यहां पर वॉर चालू है। तो मतलब ये तीनों जो जोन है बहुत क्रूशियल है। ओके, ये जोन बहुत क्रूशियल है। नाउ निफ्टी नीड्स टू प्रोटेक्ट दिस जोन। निफ्टी इज एट हाई वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया of 22,180, which was also the zone during election outcome of 2024 and Trump tariff of 2025. Will this area mark a reversal amidst the ongoing war? यहां पर will it mark a reversal? That is going to be important to be seen. वो देखना है। अभी ये डेटा देखा हमने। दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल। नाउ वॉल्यूम प्रोफाइल इफ यू अप्लाई इट ऑन स्टॉक्स, इट गिव्स यू इमेंस इंफॉर्मेशन। ये तो मैं आपको निफ्टी पे बता रहा हूं। अगर आप स्टॉक्स के ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल देखोगे, जबरदस्त चलता है, जबरदस्त चलता है। आज मेरा सीएनबीसी आवाज पे इंटरव्यू था मॉर्निंग में। किसी ने देखा था? मॉर्निंग में एक स्टॉक दिया था मैंने। डिड एनीवन सी? नॉट श्योर। द स्टॉक वेंट अप बाय 18% इवेंचुअली। कौन सा स्टॉक था? कौन बताया? देखते कौन फॉलो कर रहा है। सो मॉर्निंग में सीएनबीसी टीवी 18 मेरा 2:30 को था, उसके पहले ही मॉर्निंग में एक स्टॉक दिया था मैंने। सो एंड दैट वाज फैंटास्टिक। सो यहां पर अगर आप देखोगे, दीज कौन सा स्टॉक था? वो लेटेंट व्यू था। लेटेंट व्यू, इफ यू अप्लाई दीज काइंड ऑफ, go and check the chart of latent view. It was a reversal and up by 18%, I think. Anyone observe that? So बहुत जबरदस्त काम किया। नेल को दिया था 2 दिन पहले, उसके बाद तो ऑलरेडी 6-8% ऊपर है वो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरुण ने देखा था, वरुण वर्मा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल सीखना चाहते हो क्या आप डिटेल में? नेक्स्ट वीकेंड आप लोग अवेलेबल हो? वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन मच डिटेल ऑन स्टॉक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वॉल्यूम प्रोफाइल एरियाज। और बहुत क्लासिक टाइम है कि वॉल्यूम प्रोफाइल देके हम कैसे रिवर्सल कैच कर सकते हैं। यहां पर वी विल बी डूइंग दैट इन ऑप्शंस मंत्रा डिटेल में। नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस एंटायर डेटा, अब वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ मैं दूसरा एक और चीज ऐड करूंगा, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। आई एम नाउ गोइंग टू ऐड ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। ना ओपन इंटरेस्ट इज अ वेरी क्लासिक थिंग। और ये अभी मैं आ रहा हूं 15 मिनट चार्ट पे। आवरली चार्ट हमने देख लिया, अब मैं आ रहा हूं 15 मिनट चार्ट पे। और 15 मिनट्स पे भी मैं एक इंडिकेटर लगा रहा हूं। कौन सा मालूम है? केएसटी। ये मेरा पूरा कंप्लीट सेटअप है, विच आई एम शोइंग इट अक्रॉस टू यू, एवरी वन ऑफ यू। नाउ केएसटी पे भी आई अगेन सॉ माइनर पॉजिटिव डाइवर्जेंस हियर। मैंने जब ट्वीट किया था निफ्टी वाज अराउंड दिस एरिया, आई मेंशन लॉन्ग नहीं करना है। 22,420 को वेट करो, निकलने दो। 22,420 निकलेगा, वी विल स्टार्ट सीइंग सम काइंड ऑफ reversal, and we saw that happening. And this is a positive divergence already we saw. पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। निफ्टी ने लो बनाया, केएसटी ने हायर लो बनाया, दैट इज नोन एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ओके, यहां पर सेल्वा के साथ गो चार्टिंग लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज डायरेक्टर साहब। यहां पर इफ यू लुकिंग एट इट, the overall move has happened. However, there is one level. So वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ में एक और लेवल है जहां पर गड़बड़। दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। ओके, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है मालूम है? एक और चीज प्रॉब्लम क्या होती है, यू एंड अप एग्जिटिंग द विनर ट्रेड्स अर्ली एंड क्लिंगिंग ऑन टू द लूजिंग वन। ऐसा होता है आपके साथ ऐसे मार्केट में, जहां पैसा बन रहा है वहां से जल्दी से निकल जाते हैं, और जहां पर पैसा जा रहा है उसे पकड़ के रखते हैं। इज इट हैपनिंग? इज इट हैपनिंग विथ यू? देन डू लेट मी नो। ओके,
यहां पर if you are, it's happening all the time. Why? Because market directly gap down हो जा रहा है. Now because वो directly gap down हो जा रहा है, the problem that is happening is you are not able to get out of the stock. And so it is that I'm saying that do not carry trade overnight, because you will not have an exit plan because of the overnight risk. Now if I'm looking at this chart, what is this open interest profile showing me? Anyone? Can anyone tell me? ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या बता रहा है? 23,000 पे कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. कितना बिल्डअप है? 13.27, 1.3 CR कॉल है. पुट भी डिसेंट इनफ बिल्डअप है. ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन ये है. कॉल पुट दोनों हैवी है 23,000 पे. तो अगर निफ्टी यहां से और 200 पॉइंट की रैली होती, हु इज गोइंग टू पैनिक? If Nifty rallies by another 200 points from here, crossing this zone is not going to be easy. Call sellers have to panic. ये पूरे के पूरे फॉल के अंदर कॉल सेलर्स पैनिक बहुत बार हो चुके हैं, क्योंकि जो रिवर्सल भी आ रहा है ना दोस्तों, रिवर्सल भी शार्प है. ये रिवर्सल शार्प है, ये रिवर्सल भी शार्प है. एवरी रिवर्सल इज ऑल्सो वेरी वायलेंट. सो ऐसा नहीं है कि खाली पुट वाले ही पैसा बना रहे या लॉस करे, कॉल वाले भी पैसा बना रहे, कॉल वाले भी लॉस कर रहे. दोनों बाजू है. इस टाइम पहली बार ऐसा है कि नीचे का ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, लेकिन इक्वल फास्ट रिट्रेसमेंट्स भी है. Okay, so you have to remember that. So open interest profile is telling me the exact level. Now I am going to zoom in the chart with volume. वॉल्यूम देखते जाना आप दोस्तों. मैं चार्ट को जूम इन कर रहा हूं, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं जिससे आपको दिखे. नाउ आई एम गोइंग टू, दिस इज अ 15-minute चार्ट. हाँ, 15-minute चार्ट है. This level on a 15-minute chart that you see here, this is a 15-minute chart. On a 15-minute chart, can I say this is the level where we have very high open interest and volume area, which means crossing 22,920, this exact level, this is known as point of control. इसे क्या कहते हैं दोस्तों? Point of control. कौन सा लेवल है ये? 22,940, 22,950. मैं यहां लिख देता हूं. स्पॉट के हिसाब से कितना होगा? कितना प्रीमियम चल रहा है निफ्टी का? 100 पॉइंट्स प्रीमियम है ना. सो 22,840 स्पॉट के हिसाब से, बिकॉज ये फ्यूचर्स का चार्ट है. इज वॉल्यूम वी पॉप बोलते हैं, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल. नाउ दिस बिकम्स अ वेरी क्रूशियल चार्ट. अब होगा क्या? 3 दिन की छुट्टी है. 3 दिन में बहुत कुछ होने वाला. ओके, 3 दिन में बहुत कुछ होने वाला. नाउ इन दिस period of 3 days, what you have to do? You cannot do anything. If you want to carry a position, you need to create a spread. Now that creating a spread has to be using options. Options are very powerful instrument. By buying a call and selling a call, if you are bullish, if you are expecting a reversal again happening, by buying a put and selling a put, bear put जिसे हम कहते हैं. So what we have to see is Nifty, if manages to gap up above this level, then and sustain there, it has to sustain to some extent. अब इतना बड़ा वॉल्यूम एरिया है, उसे निकालना आसान नहीं है. द इजीएस्ट वे टू टेक आउट दिस लेवल इज बाय वे ऑफ गैप. दैट्स इट. निकालना है तो गैप से निकालना है, नहीं तो नहीं निकलेगा. सिंपल. तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है? मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है. मंडे करूंगा क्या? बहुत क्लोजली चेक करूंगा. पहले तो ये पता चलेगा भाई ओवरनाइट 400 पॉइंट ऊपर है कि 400 पॉइंट नीचे है. 400 नीचे तो लेवल दूर हो गया, तो एनीवेज कुछ करना नहीं. 400 पॉइंट अगर ऊपर है, देन व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू वेट. 22,840 है, थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए मुझे नीचे में. जैसे ही इसके पास आएगा, रिवर्सल कैंडल पे आए अगेन. व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव मैनेज टू क्रॉस अ बिग हर्डल which is 22,840 spot price. So this is known as volume point of control. Now the beauty of this method is I'm applying it on index. When you start applying this method of volume profile, OI profile with KST and one more indicator counter channel on stocks,
you will see its true power. Whether you're trading into options, whether you don't trade into options, I highly recommend you need to know these methods and these setups, because it will help you to understand गैप हो. जैसे मैंने कहा ना, इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट अ गैप. अगर गैप होगा, इट हैज टू बी अबाउट 22,840, मतलब 900 के ऊपर ही होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज द हाई वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया एंड 23,000 कॉल सेलर्स पैनिक होंगे, विच मीन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुआ. शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुआ. सो निफ्टी नीड्स टू गैप अप about 22,840, 22,900 levels, which is high VPOC. VPOC is volume profile area. High VPOC, and call sellers will also panic about this range. This can trigger massive short covering as long as 22,840 is taken out. वो निकालना जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो मुझे स्ट्रैटेजी जो मंडे करना है, मुझे वेट नहीं करना है गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी है नीचे ऊपर, वो सब की नहीं. मेरा स्ट्रैटेजी अभी से रेडी है. ओके, सो यहां पर ये स्ट्रैटेजी अभी से इसलिए रेडी करके रखा है कि मुझे पैनिक नहीं होना है. नो फियरफुल सेटर, नो फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड सेटअप है मेरे लिए. एंड यू नो why traders repeat the same mistakes again and again despite of having that experience? Because they don't have it ready. They know what they want to do, but they are not keeping it ready. I'm keeping it ready for you here. This is how I make the chart. I'm aware about what's going to happen. I'm aware about my risk, and I trade basis of that. So अगर ओवरनाइट कैरी करना है तो स्प्रेड बना के आपको पोजीशंस कैरी करना है. हाउ डू यू रीड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग लाइव मार्केट? कैन यू प्लीज टीच? अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको. चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर से दिख रहा है, which is known as change in open interest. So if you're looking at the fluorescent green color, you can see that's the change in open interest. And basis of that change in open interest, we can gauge, but that can change very fast, very fast. So I don't rely only on change in open interest. I rather rely who is going to panic, whether the call sellers will panic or the put sellers. एक चार्ट मैंने आज ट्वीट भी किया था that 22,200 is showing sharp rise in put OI. Despite Nifty 22,270 पे था यार, पुट का OI इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? Which was much higher than 23,000 का call OI. That was the time when I got something is cooking up. And so I wrote 22,420 के ऊपर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल जाएगा. निफ्टी यहां था और 22,200 का पुट OI में बिल्डअप होना चालू हो गया. और यहां पर निफ्टी था 420 का लेवल, मतलब यहां से ये फ्यूचर है, स्पॉट पे बोल रहा हूं. अगर वो रिवर्स हुआ तो जबरदस्त ट्रेंड मिले. सो व्हाट आई कंबाइंड इज, आई कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट, आई कंबाइंड वॉल्यूम प्रोफाइल, केएसटी मेथड, एंड अप्लाइड प्राइस एक्शन. भाव भगवान जी, प्राइस एक्शन इज गॉड. उसके बिना कोई भी इंडिकेटर कुछ भी कहे, मैं भी कुछ भी कहूं, नहीं, प्राइस एक्शन चलता है. एंड यू नो इट्स ऑल्सो अ साइकिल. कौन सा साइकिल है? डू यू नो? हनुमान जयंती है, साइकिल है, पूर्णिमा है. पूर्णिमा पे पता है आपको 2 से 3 दिन का ट्रेंड क्या होता है? सुबह जब गैप डाउन हुआ इतना बड़ा, मैं बोला यार आज तो पूर्णिमा साइकिल है, तो गड़बड़ है यार. मतलब गैप डाउन है, सस्टेन करेगा क्या? पूर्णिमा से 2 से 3 दिन का तो रैली बनता है, ये एक दिन में रैली आके नीचे क्यों आ रहा है? एंड देखो, प्राइसेस बिहेव्ड द वे इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी. भाव भगवान છે, समय बलवान છે, ट्रेडर पहलवान છે. इट वर्क्स डिस्पाइट ऑफ द ऑयल boiling right now. Still, it is working. So, this is how you have to combine these methods together. And यहां पर अभी अगला पोजिशनल ट्रेड कब लेना है? पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी वेट करना है. डू नॉट एक्ट. आई एम गोइंग टू ट्वीट इट अक्रॉस, आई एम गोइंग टू शेयर इट अक्रॉस. जब पोजिशनल ट्रेड लेना होगा. यूट्यूब फॉलो, आप लोग हो क्या है यूट्यूब वाले? आप लोगों का चैट आ नहीं रहा है मेरे पास में. डायरेक्टर साहब नोट करना, यूट्यूब में लोग एक्टिव है कि नहीं है, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, आप यू आर ज्वाइनिंग द चैनल, यू आर लाइकिंग इट और नॉट. ब्रिजेश रंजन, आपको मजा आ रहा है बहुत. एंड इट कैन बी अ डेड कैट बाउंस, हु नोज. मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं टेक इट एज इट कम्स, वी विल सी इट हाउ इट हैपेंस. वी आर लुकिंग एट दी
overall levels, we are looking at overall charts, we are looking at what's happening around, and that's how we are looking at it. All are active, but all are zapped by now. Fantastic, fantastic. तो यहां पर अभी करना क्या है, कौन कौन है मेरे साथ रेडी नेक्स्ट वीक में जुड़ने के लिए? और यहां पर रेडी कौन कौन है मेरे साथ रेडी नेक्स्ट वीक में जुड़ने के लिए? 11th 12th अप्रैल को वी आर गोइंग टू हैव मास्टर क्लास। नहीं, मास्टर क्लास तो सैटरडे, हमारी सैटरडे की मास्टर क्लास होगी। लेकिन मास्टर क्लास की लिंक शेयर की क्या आपने? प्लीज कैन यू शेयर इट अक्रॉस डायरेक्टर साहब, मास्टर क्लास सैटरडे को। लेकिन उसके पहले 11th 12th April we have something phenomenal. We have an options mantra which is going to be 2 days of program. यहां पर हम बहुत सारी चीजें डिटेल में देखने वाले। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी क्विक पोल। ऑप्शंस मंत्रा त्रिशूल की लिंक भी शेयर करिए डायरेक्टर साहब सभी के साथ में। आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक पोल फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस साइंस। डू यू वांट टू अप्लाई दिस टेक्निक्स ऑन योर स्टॉक्स? मैं तो निफ्टी पे बता रहा हूं, बट डू यू वांट टू अप्लाई इट रियली ऑन योर स्टॉक्स एंड सी हाउ इट वर्क्स? ये पोल ले रहा हूं, पोल में पार्टिसिपेट करना आप लोग, सो दैट आई नो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ इट और इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एवरीवन टेक दिस पोल, and if you are ready to be a part of this journey with me of learning options, not options necessarily, learning the science of trading. So Trishul has three things: options mantra, Elliott wave, Neo wave. That is Trishul, we call it. Options mantra is Om, इसलिए ओम कहते हैं हम उसे। त्रिशूल इज थ्री, शंकर भगवान का। एंड सूत्र ऑफ वेव्स इज बीज बोना, जिसे हम कहते हैं सूत्र ऑफ वेव्स। सो दोस थिंग्स आर देयर। Neo wave, Elliott wave softwares are available for faster, accurate than us. Why we are doing manual wave application? Neo wave, Elliott wave, faster softwares available है, लेकिन वो इन चीजों को कंबाइन करके आपको इस तरीके का इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता। As far as my analysis goes, I trust my eyes, I trust my hands, and I trust my charts. भाव भगवान छे, समय बलवान छे, वो देखने का नजर होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट देम मोर देन एनीथिंग एल्स। सो इफ आई हैव टू रिलाई, आई विल रिलाई ऑन माय चार्ट्स, माय मार्किंग, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। सो जो लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं मुझे बताइए। एंड यू नो व्हाई ट्रेडर्स lose money is not because they don't have the method. They lose money because they don't manage the risk. The first thing I tell my Brahmastra participants, do not keep stop loss in mind. It has to be in the system. And knowledge alone will not make you profitable. You need to combine that knowledge with the right sense of execution. That is the key. Execution karna is the key. जो traders ignore करे. So not knowledge. What I am going to give you across in these programs is not knowledge. I am going to give you across in these programs the method of execution. There is many questions here coming up. Sir, what are you going to teach in options mantra in detail? Can we, and what is the pricing? ठीक है, एक काम करता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऑप्शंस मंत्र में क्या है। लेट मी जस्ट गो अप ऑन माय PPT and share it across. But are you guys liking it, what we are doing right now here? Are you with me, every one of you? Is these videos useful? Thanks Hussein, thanks for the kind words. यहां पर चलिए अभी आगे बढ़ते। लेट्स लुक एट व्हाट इज त्रिशूल एग्जैक्टली, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन लर्न इट। So over here, there will be 2 days of sessions. Let me just mark it here. Just give me a second. And यहाँ पर जो लोग रजिस्टर करना चाहते, लिंक मैंने यहाँ शेयर की है। और यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, we will learn about 5 mantras. What are these mantras? KST is a very powerful technique, very powerful indicator. Price action, Keltner channel, super trend, plus volume profile. Options mantra मतलब ओम। इसमें 5 मंत्र हम सीखेंगे। हमारा 2 दिन का लाइव सेशंस होगा, सैटरडे एंड संडे को। ये सैटरडे संडे को जो लाइव सेशंस होगा उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएगी। प्लस अगर आप आज रजिस्टर करें, यू विल बी गेटिंग 5 बोनस वीडियोस along with this. Plus you will also learn about big players activity. बड़े प्लेयर कैसे ट्रेड कर रहे हैं। How many of you want to generate that passive source of income by learning options? Passive source of income अगर आपको generate करनी है, parallel source of income if you are into business, parallelly कैसे उसे invest करना है और trade करना है,
वीकली एक्सपायरी कैसे देखनी है, जीरो टू हीरो वाला जो एक्सपायरी डे पे गेम करते हैं कैसे करना है सिस्टमैटिकली स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, यहां पर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। वी आर गोइंग टू डू दैट इन दिस ऑप्शंस मंत्र जीरो टू हीरो वाला। प्लस यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करनी है हमें, हाउ टू लुक एट दैट ऑप्शन चेन एनालिसिस, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। और जरूरी नहीं आपको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है, आप यहां पर सीख के कैश में भी ट्रेड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू ट्रेड इन ऑप्शंस, यू कैन ट्रेड इन स्पॉट ऑल्सो, यू कैन डू दैट। एंड दोस्तों इसकी वैल्यू 49,000 है, बिकॉज यू आर हियर विथ मी इट्स 19,500। अगर आप ऑप्शंस के साथ, ये है सूत्रो ऑफ वेव्स, दिस इज नोन एज नियो वेव। I will be giving you the strategy. Don't worry. I will tell you which option strategy will work. Simple way से अगर आप आज रजिस्टर कर रहे हो, आज के दिन में ही मैं आपको एक प्री सेशन वीडियो भी दूंगा ऑप्शंस का, सो यू डोंट हैव टू वरी। एंड इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, वो रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाएगी, सो इट विल बी विथ यू फॉर 1 मंथ इवन आफ्टरवर्ड, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आई विल बी गिविंग दैट स्ट्रैटेजी ऋषि ऑफ कोर्स। प्लस अगर आप सूत्र ऑफ वेव्स में रजिस्टर कर रहे हो, यू विल बी लर्निंग अबाउट एलियट वेव, यू विल लर्न अबाउट नियो वेव, फिबोनेसी को कैसे ठीक से यूज करना है उसके बारे में हम देखेंगे, फिबोनेसी कॉन्सेप्ट्स को कैसे कंबाइन करना है, प्लस इचिमोकू क्लाउड को कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा बहुत क्लियरली। सिंपल से वे से यू विल बी लर्निंग दिस साइंस ऑफ फोरकास्टिंग द मार्केट टू द वेरी डे, आवर एंड मिनट, लुकिंग एट दिस वेव थियरी कॉन्सेप्ट आप खुद के स्टॉक्स पे कर पाओगे ये सारी चीजें। अगर आप त्रिशूल मेंबरशिप ले रहे हो विच कंबाइंस ऑप्शंस मंत्र प्लस सूत्र ऑफ वेव्स, सूत्र ऑफ वेव्स मतलब सो बीज बोना जिसे हम कहते हैं, प्लस यू विल बी लर्निंग अबाउट एलियट वेव। इसी तो त्रिशूल है दोस्तों, शंकर का 3 त्रिशूल में 3 होता है, ऑप्शंस मंत्र एलियट वेव सूत्र ऑफ वेव्स। द प्राइस इज 2,17,000 विथ मेंबरशिप which we are giving away only in 32K, which means you have live access to above program। so ये जो सूत्र ऑफ वेव्स है ये भी लाइव सेशंस होगा दोस्तों 2 दिन का। so you learn live sessions of sutra of waves, you have live sessions of options mantra, you get the recordings of it for 3 months of time। if you are registering today, डायरेक्टर साहब लिंक शेयर करिए सभी के साथ, त्रिशूल मेंबरशिप लिख के सभी के साथ में। अगर आप आज रजिस्टर कर रहे हो त्रिशूल के लिए, आई एम गिविंग यू अ त्रिशूल मेंबरशिप सेपरेटली, जिसके अंदर आपको 3 महीने की निफ्टी रिसर्च रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको अलग से 251 एडिशनल पे करना होगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है। 251 उसी के लिए वैलिड है जो त्रिशूल के पार्ट है, त्रिशूल मेंबरशिप हम उन्हें ही दे रहे, बिकॉज एडवाइजरी इज डिफरेंट एंड ट्रेनिंग इज डिफरेंट। ट्रेनिंग इज ऑन हिस्टोरिकल चार्ट एंड एडवाइजरी, सो रिसर्च रिपोर्ट वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस रिसर्च रिपोर्ट you have to pay separately 251 rupees, but this Trishul membership is exclusive offer only to people who are a part of Trishul। 3 months of Nifty research plus 3 months of Bank Nifty research ये मैं आपको दूंगा मेंबरशिप के अंदर, प्लस 3 months ऑफ क्लियरली एके इंडिकेटर मैं आपको दे रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री दोस्तों। ये सारी चीजें जिससे यू लर्न एंड यू अर्न ऑल्सो। 3 months ऑफ एके इंडिकेटर आपको साथ में मिल रहा है ये पूरे मेंबरशिप के अंदर। प्लस एक और काम मैं करता हूं बहुत क्लियरली, जो लोग आज रजिस्टर करें त्रिशूल मेंबरशिप के लिए, अभी रजिस्टर करें, उनके लिए एक मैं 12 घंटे का मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम भी दे रहा हूं, 12 घंटे का कॉम्प्लीमेंट्री, विच इज गोइंग टू बी विथ यू अंटिल द मेंबरशिप 3 months। प्लस ये प्रोग्राम 12 घंटों का रिकॉर्डिंग है, जो इंडिकेटर्स को कैसे देखना है, चार्ट्स को कैसे देखना है, जो बहुत सारे फ्रेशर्स है या ऑलरेडी मार्केट को सही तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं वो सीखेंगे। प्लस अगर आप आज रजिस्टर करें त्रिशूल मेंबरशिप के लिए, यू गेट बॉलिंगर बैंड एंड केएसटी स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट टेक्निक, इट वर्क वंडर्स। You have already seen people have talked about AK indicator. They have talked about Nifty levels work like magic. They have talked about KST, how it is helping them. ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं त्रिशूल मेंबरशिप में। सूत्र ऑफ वेव्स तो मिल ही रहा है, ऑप्शंस मंत्र तो मिल ही रहा है, लाइव सेशंस मिल रहे, प्लस
यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट फॉर 3 months ऑफ टाइम। चलिए एक और काम करता हूं, मैं आपको 10 बोनस वीडियोस देता हूं फॉर लाइफ टाइम। 10 बोनस वीडियोस फॉर लाइफ टाइम, प्लस इन दिस मेंबरशिप 3 months ऑफ रिकॉर्डिंग मैं आपको देता हूं। So that I want you to learn. Since you are giving your time to me today, I am giving this right now. KST is a very powerful indicator which is known as no sure thing. और ये इंडिकेटर फ्रीली अवेलेबल है, आपको इसके लिए बाद में भी पे नहीं करना है कि नो श्योर थिंग इज अ फ्रीली अवेलेबल। एक और काम करिए डायरेक्टर साहब, जिन्हें भी त्रिशूल में रजिस्टर करना है, त्रिशूल मेंबरशिप में रजिस्टर करना है आज के दिन, उन्हें 10K का एक टोकन लिंक पे करके रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हैं। 10K का टोकन लिंक भी दे दीजिए सभी को, और यहां पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ, लिंक यहां पर है आप लोगों के सामने। यू कैन इवन पे इन EMI एंड लिंक दे दीजिए। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। सर, आई एम न्यू टू ऑप्शंस, विल इट कवर ऑप्शन बेसिक? यस, I am going to give you pre-session video also, which is going to cover option basic, so you don't have to worry about it at all. Sir, how to use Go charting and plot volume profile? We'll be doing that in much detail on 11th-12th April. हम वो बहुत डिटेल में करने वाले हैं, so अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, but we'll be doing that in much detail, पंकज, on 11th-12th April. यहाँ पर हुसैन, thanks for the kind words. राजू, आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गया। एंड यहाँ पर okay, yeah, there is another question here. Sir, I have already a part of Bollinger Band KST देखा है मैंने। Okay, you want to be a part? See, Trishul is different. Trishul में we are giving Bollinger Band KST course as complimentary, and that's a very powerful indicator. KST is no sure thing indicator. Okay, intraday course लिया भरत, absolutely fine. But if you want to learn true sense, not only options, but if you want to learn in true sense application of how this OI data can help you, looking at option chain, looking at simple aspects of वॉल्यूम प्रोफाइल स्टॉक्स के ऊपर, इट्स वेरी पावरफुल, आई एम टेलिंग यू। यहां पर यू कैन डू दैट। डू यू डू नो कॉस्ट एमिशन ऑप्शन? नो, दैट आई एम नॉट श्योर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दैट वर्ड। परमेश्वर, यस, आप कर सकते हो EMI में पे। EMI की लिंक भी आप डाल सकते हो यहाँ पर, डायरेक्टर साहब सभी के साथ में। ट्रेडरशिप इज गोइंग टू कवर त्रिशूल प्रोग्राम एज वेल, यस ऑफ कोर्स। So if you're a part of Brahmastra, which covers tradership, Trishul is a part of it, so you don't have to worry about it. Deepak, it will cover options mantra, अगर आप ब्रह्मास्त्र में, तो आपको लिंक आ जाएगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर। एंड there is another question here. Option strategies are we going to cover? Yes, we'll be looking at, for example, suppose मुझे लग रहा है मंडे को गैप अप होगा, जस्ट इन केस, सो आई विल क्रिएट पोजीशंस ऑफ बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड भी इतना स्प्रेड रखूंगा कि अगर लॉस हुआ एक लॉट के ऊपर हार्डली 3000 जाएगा, लेकिन अगर सही पड़ा वी आर गोइंग टू मेक 6-7,000। सो you need to know how to create this kind of strategy basis of the view of the market, basis of what your take is on the event. So you are going to lose less. So making risk reward favorable by creating spreads in this market, creating spread is very very important. विवेक मिश्रा, उनको लिंक, आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, माय कलीग विल हेल्प यू आउट। तीनों लिंक साथ में शेयर करिए, 10K टोकन, EMI एंड त्रिशूल का, सो दैट एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। एमसाई, आपका डिटेल्स हो गया है यहाँ पर। सी, दिस इज वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। आपका डिटेल्स शेयर कर दीजिए, एमसाई आपका नंबर शेयर कर दीजिए। परमेश्वर, यहाँ पर अनदर क्वेश्चन है, एंड जस्ट अ सेकेंड। सर, आई एम रजिस्टरिंग फॉर ब्रह्मास्त्र, यू कैन डू दैट। यहाँ पर लिंक है, नीचे जाके आप ब्रह्मास्त्र क्लिक कर सकते हो, या इफ यू वांट टू पे ओनली फॉर ऑप्शंस मंत्र, यू कैन गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ ओनली फॉर ऑप्शंस, वेयर यू विल नॉट बी लर्निंग अबाउट वेव थियरी। एम आई मेकिंग सेंस? एंड जो जो यहाँ पर होते गए रजिस्टर, मुझे कंफर्मेशन डालते जाइए। जो जो रह गए, एक बार देखिए आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गया क्या? पंकज, आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गया? जस्ट लेट मी नो। आई कैन सी रमेश इज रजिस्टर्ड फॉर त्रिशूल प्रोग्राम। परमेश्वर का नंबर आ चुका है, डायरेक्टर साहब प्लीज हेल्प हिम विद द रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स। रुक्मणी is registered for the Trishul program, fantastic, glad to know that. And Sanjeev, आपका query solve हो गया, fantastic. Poonam has registered for Trishul program, lovely, glad to get you. Arun, glad to see you also here. Arun Vavdhane is हमारा ब्रह्मास्त्र वाले है। And
There are many people who are still yet to join in. I'm just waiting for them to confirm me back who are here. Avjit, Balwant, Bharat, आप लोग जुड़ जाइए. Give me a confirmation once you do that. Deepak Gajare, I've given information to you. Devansh, I'm waiting for you. Let me know once you confirm back. Gaurav and Harish, Jagan. Krishna, once you people have joined in, just give me a confirmation. Mohana, Nandini, Nitin, and Prakash. Okay. Radha, आपको क्या query है? Sir, I am already knowing options. What else will I learn? You learn about volume profile. We learn about strategy that will work in the ongoing market class, in the ongoing eventful week. So we'll learn that in the in the class, and we will also be looking at simple way of scalping. मतलब कैसे ऑप्शन से स्कैल्प किया जा सकता है. मे बी आप कैश में ट्रेड कर सकते हो वो डेटा से. सो यू कैन इवन डू दैट. ओके, यू कैन इवन डू इट ऑन कैश ऑल्सो. यू डोंट हैव टू रियली डू इट ऑन ऑप्शंस इटसेल्फ. सो ये सारी चीजें हम करेंगे दोस्तों. यू कैन do that. Rajan Kumar Kare, I want to learn technical analysis. So once you go on register for this program of Trishul, we will be giving you a video which is known as Master of Technical Analysis video. That's a very powerful course itself. That course itself is worth 15K, which I'm giving you complimentary. So that itself is worth a lot more. So आपको complimentary मिल रहा है. And you learn about option strategy. So this will give you complete insight into technical analysis indicators, the way I see it. And do not worry about it, Bharat. You will have access for 3 months. So you will still have access for 3 months. So you don't have to worry at all. Rajat, is there anything else? Is there live technical analysis class? Live as in, yes, we'll do it on Saturday, Sunday. Live ब्रह्मास्त्र में होता है जो हम करते हैं ड्यूरिंग द इवनिंग 7 to 10 वेयर वी लुक एट लाइव सेशंस ऑफ यूएस मार्केट. अगर वहां हम ट्रेड ले रहे तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी इन डाउ जोन्स, हाउ वी लुक एट इट, and you share your charts across with me. I look at it, I correct it, and we do those things. And now we allow people to even talk, sharing the chart and talking and explaining it to me and everyone in the Gurukul is what we have started as an initiative. So in Brahmastra, we are doing that where you identify a trade, say on Dow Jones Industrial Average US market, and you share the chart with risk reward, you explain, and then I correct you. So that's how we are going to be doing it. Yes, of course, Vivek Mishra, it is including GST, will be giving you the invoice, definitely. Okay, you can just register yourself and fill in your details. My team will help, will coordinate with you once you confirm back to us. Okay, and Oja says a question, sir, I have liquidated my portfolio, invested the money in liquid funds. Until that, as per Neo Visible, I'll reinvest in money equities. Yes, your method is more or less is correct, but see, remember one thing when you're looking at it, you exited as a classic time basis of Neo Wave, and you want to enter as per Neo Wave confirmation. Yes, the method is valid, but look at a little bigger time frame picture so that you don't get whipsawed around. So just be a little careful there from investment perspective. Sir, are we going to learn about long-term investment also in Trishul? Yes, we'll be looking at that. So, जो भी method हम कर रहे can be applied even on a weekly chart, even on the daily time frame chart. For long-term investment, multi-bagger stock identification, you will be able to do that. And सबसे ज़्यादा important होता है समझना, people lose money not because they don't know what to be done, but because they do not have the confidence and conviction to take a trade. That confidence and conviction will come once you apply the methods in a systematic step-by-step fashion. So I'm going to give you notes. Step लिखा हुआ रहेगा उसमें. Step 1 क्या देखना है, Step 2 क्या देखना है, 3 क्या देखना है. And that's why it's going to happen. Many traders also fear pulling the trigger. Setup है, होता है आपके साथ. There is a very good setup, but they still fear to pull the trigger. The reason they fear to pull the trigger is because इतने बार लॉस हो चुका है कि कन्विक्शन ही नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है. ऐसा लगता है मैं ट्रेड करूंगा, मार्केट मेरे लिए ही बना है, मैं ही ऊपर टॉप पे बाय करूंगा, मैं ही लो पे सेल करूंगा. ऐसा होता है आपके साथ, वेर यू आर फियरिंग नाउ टू पुल द ट्रिगर.
because you're not looking at one aspect, risk reward. When you are pulling the trigger or when you are fearing to pull the trigger, just look at it. Is it my setup? Can I repeat it 100 times? And is the risk reward favorable? ये तीन चार चीजें आप खुद को पूछना है, वो मैं बताऊंगा आपको. We'll do that in much detail. Don't worry about it. वो करेंगे हम. Okay. Am I making sense? लिंक शेयर कर दीजिए सभी के साथ वापस से. If you have questions, I am more than happy to answer your questions. और यहाँ पर there is also one more very important psychological factor which majority of the traders are going to have fear about. Suppose if tomorrow market rallies, war is ongoing, market rally हो गया, no one is going to buy that story. Nifty is up by 500 points. दिमाग में चलेगा नहीं बेचना है. क्यों? क्योंकि मार्केट रैली कैसे हो सकता है? मैंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया और न्यूज तो अभी भी बेरिश ही है. नाउ दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट, न्यूज इज स्टिल बेरिश and they will still not participate until Nifty is up by 2000 points. That's how it's going to happen. And majority will miss it. That does not mean you have to buy now. I'm just saying for that you need to have a method so that you know this level crossed. I know गड़बड़ है, market reverse हो रहा है, news कुछ भी होने दो, मुझे यहाँ पर long. So that's, you have to do that. And for that you need to have a method. That method I'm going to teach you here. What is the OI data showing? What is volume profile showing? Is that level near, if prices, say for example HDFC Bank, just as an example, I do not have positions, I do not have holdings. If prices are near that volume area from where it has reversed, from where it can reverse, I'll keep a watch on that volume area, like I showed you on Nifty today. If Nifty, if HDFC Bank is opening above that volume area, matlab reversal aa raha. That's how I'm going to look at it. Am I making sense? Every one of you? Okay. I'm just checking. Abhi, or are there more questions? Please feel free to ask any questions. Are there Brahmastra participants? If you have questions, ask me. Not only about this, it can be anything. Sir, what is volatility skew you showed today on the chart at 1240? That's a classic chart. आपने देखा था क्या? आप लोगों ने ट्विटर पे देखा था? I've talked about a volatility skew, which is a very superb chart which shows the high end of volatility on the put side and the lower volatility on the call side. And if the IV increases on the call side, volatility skew, it's a sign that something is happening even on the call now. So that's what I'm going to do. Raju Saha का क्वेश्चन है, सर आई एम इंटरेस्टेड 3 months ऑफ वैलिडिटी along with my job might be difficult. 3 months बहुत होता है दोस्त. अगर आप हर दिन का आधा घंटा भी देखोगे ना तो बहुत हो जाता है. आई रिक्वायर half an hour from you. कैन यू नॉट डू दैट? इतना तो निकालना पड़ेगा टाइम. मैं भी निकालता हूँ आप लोगों के लिए, आप इतना निकालिए मेरे लिए. आई एम आस्किंग यू ओनली half an hour a day. If you can do that, you will be through. Do not worry about it. Okay. And it's a process. There are no shortcuts to success. There is no shortcut to success. Remember that. It's a process. You need to follow the process and the step. Poll is also ongoing. Please participate in the poll. I feel that when VIX is high, then managing gaps is easy with OTM options. Yes. Brilliant observation, Ujjwal Kumar. जब VIX बढ़ा हुआ है ना, गैप मैनेज करना OTM options के साथ easy है. But you have to look at IV chart. Implied vol is a very brilliant thing. We'll be doing that in options. मतलब IV chart जबरदस्त है, हम करेंगे ना डिटेल में. कौन कौन है यहाँ पर जुड़ चुका है? डायरेक्टर साहब एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए ना नाम का, सो दैट आई नो कौन कौन आ चुका है. रोहन आ चुके हैं यहाँ पर, फैंटास्टिक. रामाकृष्णा, ओके, आप भी जुड़ चुके हैं. त्रिशूल में लवली. यहाँ पर योगेश आ चुके हैं त्रिशूल के लिए. ओह फैंटास्टिक. और कौन कौन अभी रुका हुआ है यहाँ पर? फटाफट से कंफर्म कर दीजिए. भरत, आप आ गए क्या? विश्वजीत, दीपा, आई एम वेटिंग फॉर यू. दीपक, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया. विक्रांत भी आ चुके हैं यहाँ पे. लवली. दिव्या, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल्सो. गजेंद्र, आप हो गए क्या रजिस्टर? एंड जगन, कमलप्रीत, कविन प्रभु, बहुत सारे जन है यहाँ पर जो अभी भी रुके हुए. एम साई, आपका हो गया क्वेरी आंसर. माधव, फैंटास्टिक. संदीपन कह रहे सर ऑल कोर्सेज ऑफर्ड. फायर सर्च आर ऑसम.
can change any novice trader into a fearless time rider. Thank you very much. Fantastic to do that. Padma Nashi, आप already ब्रह्मास्त्र में हो. Lovely. नेहा आप आ गए क्या? जुड़ गए? So confirmation डालते जाइए जो जो यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं. प्रकाश, राजन, राजू, आपकी क्वेरी आंसर हो गई. लवली. श्योर विक्रांत, आप रजिस्टर कर सकते हो सेम टोकन लिंक पे. फॉर ब्रह्मास्त्र के लिए आप कर सकते हो उसी लिंक पे. ब्रह्मास्त्र की नहीं तो टोकन लिंक आपको माय कलीग विल शेयर इट अक्रॉस राइट नाउ. आप उस पे भी कर सकते हो. यहाँ पर लिंक शेयर किए विक्रांत आपके साथ में ब्रह्मास्त्र के लिए. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. विशाल, लवली, ग्रेट गाइस. सो आई थिंक क्यूएनए सेशन हमारा होने वाला है. उज्जवल, अगर अभी क्वेरी है आप यू कैन आस्क मी नाउ ऑल्सो. राजू साहब भी रजिस्टर हो चुके हैं. लवली. हमारा क्यूएनए सेशन वी आर गोइंग टू कीप इट अक्रॉस इन द कमिंग वीक. ऑलरेडी वेडनेसडे 8th of April को ऑलरेडी प्लान्ड है. डिड वी सेंड द लिंक टू ऑल द ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स? Okay, we are yet to send the link. So Ujjwal, we already have that calendar blocked for 8th of April. We'll be sending the link on Monday. So you'll be getting it on Monday. Just keep your emails checked. We'll be sending it across on an email. MSI, आपका number drop कर दीजिए. For any queries, we'll be more than happy to help you out. Okay, fantastic, guys. Poll is ongoing. You can participate in the poll. And thank you everyone for joining in. It was wonderful speaking to you all. Markets are volatile, moving in gaps. You have to maintain stop loss. Look at the risk and ensure that you do not trade basis of just your conviction. You trade basis of the method, and it will work fantastically. I'm just going to share across a disclosure, guys. Disclaimer: we are SEBI registered research analysts. Whatever we are doing is purely learning perspective. Investment in market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. Thanks, Bharat Singh, for the kind words. These are the disclosure, and it's always wonderful, guys. It's super to see you all here, and we'll meet again soon on Saturday, 11 a.m. In the masterclass. And wishing you again, everyone, a very happy Hanuman Jayanti. See you soon. Thank you very much.